Hi guys, welcome back to my channel. Today the video is just gonna be a vlog. I haven't uploaded any vlog yet to my channel, so I thought I'm gonna do a vlog today. And I have a duty. I am doing an airport standby, so I thought I'm gonna show you that what we actually do in an airport standby duty. And I just woke up, that's why my eyes look swollen, my face looks swollen. I didn't even wash my face yet. So I'm just gonna get up from my bed, do all my chores. I have to clean the house also. I need to do my breakfast. I need to make my breakfast first, then eat it. Then I need to make my lunch also because my duty starts at around 12 o'clock. And so I thought I'll pack my lunch and I'll take it in. And so a lot of work. Around almost by 11:30 I need to start getting ready also because my cab will come by 11:45. So a lot of things to do. So let's get started, guys. And I just got freshened up. I just brushed my teeth, washed my face, and I had to do a quick skincare routine also. And then I'll go and make my breakfast. And I need to remove my nails also because my nails are quite lengthy and these lengthy nails are not allowed being a cabin crew. So I had to remove my nails, apply a nail polish, or I have a shorter length nails also from So Easy Press On. So I thought I'm gonna apply that. Maybe it depends on my mood. Maybe I'll apply that. Maybe I'll apply a nail paint and then do the duty. But anyways, right now the priority is to do a skincare and then I'll go and apply my nails and remove my nails and then I'll go for my breakfast. और जैसे आपको तो पता है जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का बालकनी से आपको नज़ारा यहाँ का। और ये देखो हो रहे हैं अभी कोई 8 साढ़े 8 बजे हैं और ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। खोल के दिखाती हूँ बाहर, पूरा गीला हो पड़ा है क्योंकि बारिश हो रहा था। एनीवेज ये है मेरा बिल्डिंग और ये मैंने एक छोटा सा झूला लगाया था यहाँ पे जस्ट बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मेरा 9th फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर पे है मेरा घर। सो आई थॉट कि एक टाइम पास भी होना चाहिए ना, तो एक झूला लगवा लिया था मैंने। और ये सारे कर्टन्स जो ग्रीन कर्टन्स वगैरह आपको दिख रहे हैं ये सब तो ऑलरेडी ओनर ने लगाया रखा है पहले से। आई रियली हैड प्लान्स टू रिमूव इट बट अभी तक तो हटाया नहीं है इसको भी हटाना है यार, क्योंकि बहुत ऊंचे पर है, हाइट आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला था मुझे लगा, तो इसलिए मैंने हटाया नहीं है। लेट्स सी अगर मेरे हस्बैंड आएंगे जब भी तो आई आस्क हिम टू रिमूव इट। फ़िलहाल तो आई डू माई टाइम पास बाय सिटिंग हियर, टेक अ बुक, look at these nazara and sit. And I'm done with all my skincare and skincare के बाद मैं अलग ही ग्लो कर रही हूँ ना, पता नहीं जस्ट अच्छा लग रहा है मुझे खुद को देखकर। एक नई शुरुआत लग रही है आज के दिन। So guys, I've removed my nails. I've applied these nails which has glitter on tips and also shorter in length. So these are allowed in my company. So I thought I'll apply this. So I've applied this. अभी तक मैंने बेड से उठी नहीं हूँ, रूम का दरवाज़ा भी नहीं खुला, यू कैन सी इट्स स्टिल देयर, और बहुत सारा काम बचा है, ऑलरेडी 9 बज गए। आई थिंक आई माइट हैव टू स्किप माई ब्रेकफास्ट, आई एम नॉट श्योर। एनीवेज पहले तो क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। और गाइस ये मेरे घर का एक और बालकनी है और मेन बालकनी बेसिकली जो लिविंग रूम से अटैच्ड है। पिजन नेट लगाना पड़ा क्योंकि पिजन बहुत आते थे, बहुत परेशान करते थे। छोटे से मेरे गार्डन सेटअप, दैट्स इट। फर्स्ट आई हैव टू ड्रिंक माई हॉट वाटर। ये मेरा केटल जो है ख़राब चल रहा है, यहाँ पड़ा हुआ है, ख़राब चल ही नहीं रहा है। सो आई थॉट आई हैव टू हीट माई वाटर इन द गैस ओनली। ये पानी गर्म हो गया है, या तो मैं इसमें नींबू प्रेफर करती हूँ कभी, या तो आई प्रेफर एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर भी काफ़ी हेल्दी है मॉर्निंग में खाली पेट, सो आई टेक दिस। तो गाइस सब कुछ कर के तो बहुत लेट हो गया है, अभी ऑलरेडी 11:10 बज गया है और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। सो मैंने ब्रेकफास्ट तो मैंने कट ही कर दिया है क्योंकि डायरेक्ट लंच कर लिया जाए, तो लंच बना दिया है मैंने। लंच थोड़ा सा पैक भी करूँगी, थोड़ा सा भी खाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और लंच में मैं खा रही हूँ खिचड़ी, किनोवा खिचड़ी और थोड़ी सी सब्ज़ी और इसको ही पैक करके लेके जाऊँगी।
और बहुत सारा काम बचा हुआ था, मुझे वीडियो भी अपलोड करना है। मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया है, पता नहीं क्या हो गया लैपटॉप को। तो लैपटॉप तो मुझे पता नहीं, अब देखती हूँ शायद शाम को वापस आकर मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। फ़िलहाल जल्दी से लंच करती हूँ और तैयार होने जाती हूँ, कहा कि बहुत लेट हो गई हूँ। सो गाइस जस्ट गॉट रेडी, 11:45 हो गया है, गाड़ी अभी तक आया नहीं है। सो लेट मी कॉल द ड्राइवर एंड गो डाउनस्टेयर्स। सी यू सून इन द एयरपोर्ट। And as soon as I reach airport, I've got work to make some greeting cards. वैसे मेरा प्लान था कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें शूट करूं, बट टाइम ही नहीं मिला। इस बीच मैंने लंच भी कर लिया, थोड़ा गॉसिप भी हो गया मैनेजर के साथ। काफ़ी सारी क्रू का आना जाना भी लगा हुआ था, और साथ साथ में आई एम डूइंग माई ग्रीटिंग कार्ड वाला जॉब ऑल्सो। और मैंने एटलीस्ट 9 ग्रीटिंग कार्ड बनाए बैठ कर। वैसे एक क्लिप मैंने टाइम लैप्स में शूट किया तो इट फील जल्दी जल्दी हो गया, बट गाइज नो, इट टुक मी सो लॉन्ग टू फिनिश एंड मेड मी सो टायर्ड. And after quite a hectic standby, I am heading to my home finally. Also thinking that I have more work waiting at my home. Hi guys, so just came back at my home right now. Super tired, and generally standbys are not super tired because we don't do anything. We just sit, relax, we eat food, we watch some movie, or we do some Insta binging or YouTube binging. That's what we do generally, because it is in case of an emergency we get pulled out. Suppose some crew had not come and some crew has reported sick for any flight, then we get pulled out for that flight. So that is the only reason that we have airport standby duty. But today it was a hectic day because my manager had gave me some task, because she wanted me to make some greeting cards because some new joinees were coming today. So I had made 8 cards, and some manager apart from her is resigning today, and today is her last date, so I have to make card for her also. This is not your duty being a crew, but she just politely asked me to do it, so I thought okay, I'll do it. So I was making a card for them, lot of cards, because 8 new joinees and 1 resignation card, so a lot of cards were there. So all my hours just went by in doing that. And also I had to remove my makeup now, take a quick shower and sit in front of the laptop because I had to upload a video. I was supposed to do that in the morning, but I couldn't do it because my laptop got crashed. Now I finger crossed, I really hope that my laptop is working and I could upload a video for today's content, because I didn't upload today's content yet. And that's all about today's video, guys. I really hope that you love it because this is my first time trying a vlog. So if you like this vlog, please make sure you like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching, and I'll see you soon in my next video. Bye.